Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is a continuation of the identification problem when we have simultaneous equation system, or what you call more than one equation in a system that should be solved simultaneously. When you have such equations, you try to know the identification status of the model. For example, as you know, the model may be over-identified, unidentified, or exactly identified. When you know about the status of the identification, then you apply techniques accordingly. For example, you apply ILS or indirect least square to exactly identified equations. If the equation is over-identified, we have to switch to other techniques like two-stage least square, three-stage least square, and so on. So when the equation is under-identified or unidentified, you cannot solve or find the values of the parameters of the equation. So today's topic is related to mainly exactly identified equations. When you have exactly identified equations, then you can estimate the parameters consistently by using indirect least square technique. OLS is no more consistent, so you cannot use ordinary least square for solving for the parameters of more than one equation in a system of equation where you have the problem of endogeneity, simultaneity, and so on. So today's task is to elaborate how to apply the indirect least square and what is indirect least square, and when not to apply indirect least square. So we start by identifying the equations. We can use order condition. To look at the identification status, as you know, we solve the system of equations and try to transform them into reduced form equations. And looking at the reduced form equations, we try to express the structural parameters, which you call alphas and betas, in terms of the reduced form coefficients, which we usually symbolize as pi. So if you are able to express the structural parameters in terms of the reduced form coefficients in one single way, the equation is exactly identified. Remember that the model is not identified or exactly identified or over-identified. It is the individual equation that is exactly identified or over-identified or unidentified. So it is possible in a model that one of the equations is exactly identified and the rest are not, or the rest are unidentified or over-identified. We will take simple models in which all the equations are exactly identified first, and we will try to apply the procedure of indirect least square. So when we apply the procedure of indirect least square, the equations should be exactly identified. So remember that if the status of identification is different, we wouldn't be applying indirect least square. Because, for example, if the equations are over-identified, you may have more than one way to express the structural parameters in terms of the reduced form coefficients. When you have more than one way, then you can usually express in two different ways or three different ways or four different ways. So you don't know which value of the structural parameter should be taken. So ILS wouldn't be a good procedure or good technique to apply. When you have exactly identified equations, you have only one way in which to express the structural parameters in terms of the reduced form coefficients. So using those expressions, we solve for the parameters and find their values. So in fact, when we have a simultaneous model, we have a system of equations which are related. For example, the dependent variable of one equation is related to the error term of the other equation. Then we must use some other technique other than ordinary least square, because for ordinary least square, you have some assumptions. Like, for example, the variables on the right-hand side of the regression equation should be exogenous. They shouldn't be related to each other, or they shouldn't be determined from within the model. So in fact, in a single regression equation, you have only one endogenous variable, and that is the one on the left-hand side, which you usually call the dependent variable. But when we have a system of equations, we may have endogenous variables on the right-hand side of the equation. So when this is the case, you usually try to transform the model into a form that is reduced form, where you have only exogenous variables on the right-hand side. In such cases, you can apply OLS. So what we do in indirect least square is we transform the model into reduced form equations, where in the reduced form equations, you have only exogenous variables on the right-hand side. So we can apply ordinary least square or OLS to the reduced form equations. When we can do that, we can indirectly find the parameters alphas and betas with the help of the expressions that we generate due to the process when we transform the equations into reduced form. So we have generated some expressions like, say, alpha is equal to pi 2, 1 over pi 1, 1, etc. And using those expressions, we can indirectly find the values of alphas and betas or any other structural parameter. So this is what ILS does. So when you have a system of equations,
we apply ILS when the equation is exactly identified. So if one of the equations exactly identified, you apply the indirect least square to that equation only. If all are identified, exactly identified, you apply indirect least square to all of the equations in the system. So when OLS is not able to provide consistent estimates in case of exactly identified equations, when we have a system of equations, then we start with indirect least square, and we have a specific standard procedure to do that. So if we apply OLS to the individual equations in a system, we will get different values of the parameters. But if we apply ILS, definitely the values will be changed. They will be more reliable and consistent, because the equations are determined simultaneously. For example, if you remember the demand and supply equations in the market model, you know that the demand and supply are simultaneously determined, or in other words, the two endogenous variables, quantity and price, are determined together by interacting the demand and supply forces. So this is why we cannot estimate the demand equation and supply equation separately by applying OLS. We have to apply some other technique. So today's focus is indirect least square. So let's speak of the steps involved in indirect least square. So first of all, you want to know the identification status of the equation. So we have two ways, for example, which we have done. One, we can solve the equation by substituting one equation in the other equation, or by using some kind of equilibrium condition or some other condition. By solving the equation and finding the reduced form of the equations, we try to express the structural parameters in terms of the reduced form equations. So in some cases, like we'll discuss two-stage least square, we don't need to solve the model. We just need to write the reduced form equations and then look into the identification status by using order condition. If you remember order condition, without solving the model, you can know about the identification status of the equations. So first we verify by order condition that the equations are exactly identified or no. If they are exactly identified, we can apply indirect least square. But remember, in case of indirect least square, you need to know how to express the alphas and betas or the structural parameters in terms of the reduced form coefficients. This is why in two-stage least square, which we will be discussing later, we don't need to solve the model and try to express the structural parameters in terms of reduced form coefficients. But in today's topic, that is indirect least square, we must know how to express the alphas and betas, the structural parameters, in terms of reduced form coefficients. So this is why we have to solve the model, and this is the first step. So the first step is first use order condition to know about the identification status, and then you need to solve the model, in fact, to get the expressions in which alphas and betas or gammas are expressed in terms of reduced form coefficients. So when we do that, we can then indirectly first estimate these reduced form coefficients, which you call pi's, applying ordinary least square. Why can we apply ordinary least square here? Because now in these reduced forms, you have only exogenous variables on the right hand side. Let me remind you that when we have reduced form equations, it must have two properties. One, you have only exogenous variables on the right hand side in each equation. Second, you must have all the exogenous variables of the model in the equation which you are considering, whether the variable was originally present in the equation or no. So in each reduced form equation, we must have all the exogenous variables of the model. So also you must remember that as many endogenous variables as you find in a model, you need that many equations. So if you have two endogenous variables, you need two equations. If you have three endogenous variables, you will be needing three equations. So whatever number of equations you have, first you will verify their status by order condition, then you will solve the model in order to get those expressions with the help of which you will find the values of the parameters that are consistent, because OLS doesn't provide consistent estimates. So when you solve the model, you have some reduced form equations. If you have two endogenous variables, you have two reduced form equations. So now what we do for both of the reduced form equations, if the equations were exactly identified, we apply OLS or ordinary least square. Let me tell you again, we can apply OLS to the reduced form equations because we have only exogenous variables on the right hand side. There is no problem of endogeneity, simultaneity in the reduced form equations. So we do that by OLS. When we get those parameters, then we use the expressions that we generated for alphas and betas and gammas, whatever parameters you have, and using those, we indirectly get some values of alphas and betas and gammas, or whatever the structural parameters are called by you.
So this is an indirect way to calculate the values of structural parameters with the help of reduced form coefficients, where we have estimated the values of reduced form coefficients with the help of ordinary least square. So if we apply OLS directly to the original equations, the structural equations, we wouldn't get proper values. So we have to do that indirectly by applying OLS to the reduced form equations, and then using that information, we can get the structural parameter values indirectly. This is what the indirect least square does. Now let's take some examples. We'll take few examples of the models where we have exactly identified equations, and we'll apply whatever technique we have discussed, and we'll take some sample data by using the Excel files that will be provided to you, and we will apply the technique and find the values of the parameters. We can also compare them with the values of the OLS parameters if we would have applied OLS directly to them. So consider a model which you are seeing on the slide. Y1 and Y2 are the endogenous variables. As you are seeing, we have two equations in the slide, Y1 in terms of Y2 and X1, and Y2 in terms of Y1 and X2. So we have structural parameters alpha naught, alpha 1 and alpha 2, and beta 1, beta naught and beta 2. We have two error terms E1 and E2. So you understand this model. So first we can apply order condition to see whether the equations are exactly identified or no, or whatever is the identification status. So you know that order condition estimates two parameters, P1 and P2. We call them P1 and P2. The first one is the number of exogenous variables excluded from an equation. For example, if you look at equation 1, there is only one exogenous variable that you don't find in equation 1. It is in the model, but you don't find it in equation 1. That is X2. So the number of exogenous variables excluded from the first equation is 1. And the second parameter, as you remember, is number of endogenous variables in the model, -1. So you have two endogenous variables. So -1 means you have P2 as 1. So P1 is equal to P2. Whenever these two parameters, the number of exogenous variables excluded from the equation and the number of endogenous variables in the model -1 are equal, the equation is exactly identified. So equation 1 here is exactly identified. Similarly, if you look at equation 2, there is only one variable, exogenous variable, that is excluded from equation 2. That is X1, which you find in equation 1, but you don't find in equation 2. So it is excluded from equation 2. So your parameter P1 for equation 2 is again 1, and P2, the number of endogenous variables in the model -1, is 1. So 1 is 1, so you have P1 and P2 equal for the second equation as well. So both equations are then exactly identified. So we can, or we are able to find the structural parameters alphas and betas in this case with the help of the reduced form coefficients, and we'll do that. For example, if you look at the model, we have given the reduced forms as Y1 in terms of X1 and X2, and Y2 also in terms of X1 and X2. You are seeing the equations on the screen. So pi 1 naught, 1 1 and 1 2, and pi 2 naught, 2 1 and 2 2 are the reduced form coefficients for the reduced form equations of this structural model. So remember that we have only exogenous variables on the right hand side of an exactly identified reduced form equation. So in Y1 and Y2, we have the variables X1 and X2. Also remember, we have both the variables of the model. For example, X2 was not present in the first original equation Y1, but now in the reduced form, you will find both X1 and X2. So remember, you have all the exogenous variables of the model in the reduced form equation. So Y1 and Y2 give the reduced forms in terms of two exogenous variables X1 and X2. So now what we try to do later is to try to express the alphas and betas in terms of this pi 1 naught, pi 1 1, pi 2 naught, etc. In the next slide, you will be seeing these expressions. So if we express or try to express the structural parameters in terms of reduced form coefficients, you get these values that you are seeing. I recommend that you take a paper and try to solve for yourself and see how we got these expressions. For example, beta 1 can be expressed as pi 2 1 over pi 1 1. Similarly, alpha 1 can be expressed as pi 1 2 by pi 2 2. And then beta naught and beta 2 and alpha naught and alpha 2 can be expressed in terms of the reduced form coefficients as well. So if we are able to do that, the equation is exactly identified. So these two equations are exactly identified as we are able to express all the alphas and all the betas, all the structural parameters of these two equations in terms of the reduced form coefficients. So now what will we do? We'll try to estimate the values of pi 2 1, pi 2 naught, etc.
based on some data by applying OLS. Let me remind you again, we cannot apply OLS to the original equations because you have endogenous variables on the right hand side. But we can apply OLS to the reduced form equations because we have only exogenous variables on the right hand side. So let's do that taking an example. So the example which you are seeing has 4 variables, y1, y2, x1 and x2. And you have this data and the solution in the Excel file that you will be provided, ils.xlsx. So since you have 4 variables, 2 of them are endogenous and 2 are exogenous. So as you know, the reduced form equations in terms of y1 and y2 contained 2 equations where y1 was dependent on x1 and x2 and y2 was dependent on x1 and x2 as well. This means we need to run a regression on this data, y1 on x1 and x2 and y2 on x1 and x2. So we'll get some estimated parameters. You can use the line st command or you can use the data analysis tool presently. Or if you are now familiar with stata, you can use stata to find these regression equations. Although you can directly use stata commands to solve for the parameters using the ILS technique. But presently we'll confine ourselves to the manual procedure of doing that so you can know what actually goes on the background. So what goes on is that you have 2 equations, y1 on x1 and x2 and y2 on x1 and x2. We estimate the reduced form coefficients. You are seeing 2 equations. y1 is 54.96 minus 0.245 x1 minus 2.359 x2. Similarly, you have some values in the second equation. So what these values are? These are the values of the reduced form coefficients. For example, y1 had reduced form coefficients pi 1 naught, pi 1 1 and pi 1 2. Pi 1 naught was the intercept, which is 54.96, and pi 1 1 is minus 0.245. Remember to retain the sign as well, because we write the reduced form equations using plus signs always. We always use plus signs. So it's the value of the reduced form coefficient that is minus or negative or positive. So you have the negative value of pi 1 1, which is minus 0.245. And then a negative value for pi 1 2, which is minus 2.359. Similarly, in the second equation, if you remember, the second equation was written as y2 is equal to pi 2 naught plus pi 2 1 x1 plus pi 2 2 x2. So these values as the coefficients of x1 and x2 in fact are pi 2 1 and pi 2 2. And the intercept is pi 2 naught. So pi 2 naught is 3.011 and pi 2 1 is minus 0.039 and pi 2 2 is minus 0.152. Now we have got the values of these reduced form coefficients. What we can do is we can indirectly use them to get the values of the structural parameters. So you can see that we are comparing the equation 1 with the estimated equation 1 and equation 2 with the estimated equation 2. And this gives the values of pi's that I just told you. In the table you are seeing the values of pi's. So you can have a quick glance at, say, pi 1 1 for example is minus 0.24518, etc. So we'll use these estimates and get the structural parameters. Remember that we had developed or generated some kind of expressions to find the values of the structural parameters with the help of these reduced form coefficients that now we have estimated. So let's use those expressions and find the values. So if you use those expressions and find the values of alphas, the values are given on the screen. For example, alpha naught ILS, this means this alpha naught has been estimated using ILS. This means we indirectly use the values of the structural parameters to find this value. And as you are seeing, this value is 8.15. Similarly, alpha 1, alpha 2, beta naught, beta 1, beta 2, all have ILS in their subscript. I have put this subscript to identify that these are not the OLS estimations, these are the ILS estimations. If you would have applied OLS to the equations separately, you have got different values. For example, for beta naught, beta 1 and beta 2, the values are different from the OLS parameters. You can just run a regression independently and check for that. But remember, OLS estimations for these kind of equations wouldn't be providing proper estimates of these coefficients. It is ILS that provides you reliable and consistent values of these estimates. So if you just substitute the values of the reduced form coefficients pi's in the expressions that you just saw a while back, you will get these values of alphas and betas, and then we can write the original structural equations in terms of these coefficients. For example, on the screen you are seeing that we have just used these estimated values of alphas and betas
to write the estimated equation. Remember, this equation is estimated with the help of indirect least square. You are seeing on the screen y1 is equal to 8.15 plus 15.55 y2 plus 0.369 x1, and similarly you have the values of the second equation. So remember, these equations are estimated using indirect least square, and this is a technique by first, for only exactly identified equation, find the reduced form coefficients, find the expressions. Expression mean structural parameters alphas and betas should be expressed in terms of pi's. Pi's are the symbols we use for reduced form coefficients. When we do that, we'll estimate these pi's with the help of ordinary least square, and then use those values to get these values that you are seeing on the screen, which show that you have got some values of these structural parameters which are different from the ordinary least square estimations of these structural parameters if you would have estimated the equation separately. Now we haven't done it separately. We have simultaneously solved. We have found the values of these structural parameters that are reliable and consistent by applying the technique that we are calling ILS. Let me briefly tell you some steps. One, you will know whether the equation is exactly identified. You will know the identification status of the equation, all the equations in the model, so that you can choose a proper technique to apply. For an exactly identified equation, the proper technique is ILS. When you choose ILS, you need the expressions of alphas, betas in terms of pi's. When you have them, you can estimate the pi's, the reduced form coefficients, by OLS. When you have these values, you can substitute them in the expressions and get the values of alphas and betas indirectly. This is why it is called indirect least square. So in this example, you saw how we can apply ILS to a system of equations where you have exactly identified equations. Suppose one of the equations was exactly identified and the second was not. So we would have applied the ILS only to the first equation. But as both of them were, we applied ILS to both of the equations. You just saw an example which showed that how can we apply ILS to exactly identified equations. To elaborate the matters, let's take a different type of model. In this model, this time you have a market model. Remember that in normal structural models that you just saw and a market model, there is a difference. For example, you can easily identify the endogenous variables in the structural equations, y1 and y2 on the left hand side, because you saw them also on the right hand side. But in a market model, you have quantity demanded and quantity supplied on the left hand side. So both of them are not different because you have an equilibrium condition stating that quantity demanded is equal to quantity supplied. When you have that, then you know that quantity demanded and quantity supplied are not two different things in equilibrium. So it is the same value, which we call Q. So one of the variable which is endogenous is Q. But you must have a second variable. You have two equations and one equilibrium condition. So in a two equation model, you need two endogenous variables. So if you look at the market model or you think of the market model, you know that two variables are simultaneously determined in the market model, that is the quantity and the price. So this is why we say that quantity and price both are endogenous, although price is only existing on the right hand side of the model. So when we look at the model of the market model, you know that quantity and price are endogenous, rest of the variables are exogenous. For example, if you look at the screen, you have a demand function or demand equation with variables P and I. P is price and I is the income of the consumer. And you have a supply equation dependent on price and T, that is level of technology. So if you apply order condition, you will quickly notice that both of the equations are exactly identified because the number of variables, exogenous variables excluded from the equation is exactly equal to the number of endogenous variables in the model minus 1. So you know order condition, so both are exactly identified. You also know that when you have exactly identified equations, you can apply indirect least square. And what is the procedure of ILS? Very simple, you know that now through the previous example. One, you need the expressions. Which expressions? The ones where we express alphas and betas or structural parameters in terms of reduced form coefficients. So you need to solve the model. Later on, when we apply 2SLS, etc., other techniques, you don't need to in fact solve the model. Ordered condition is sufficient to tell you that the equation's identification status is such that you apply 2SLS or other models. So here we need the reduced forms. We can solve and get two reduced form equations, one in terms of price and second in terms of quantity. So you have an equation for price and an equation for quantity. As price and quantity
are the endogenous variables. So you are seeing these two equations on the screen. P is expressed in terms of, say, T and I, and Q is also expressed in terms of T and I. This T and I are exogenous, and pi's, which are the coefficients, are called reduced form coefficients. The expressions which contained residuals or disturbance terms are labeled as V1 and V2. मैं आपको बड़ा आसानी से बता दूं कि ये जो reduced form equations होती हैं, इसमें लाजमी है कि राइट हैंड साइड पर तमाम एक्सोजेनस वेरिएबल्स आपको नजर आएं. किसी भी reduced form equation में मॉडल के अंदर जितने भी एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं, चाहे वो इस इक्वेशन में थे या नहीं थे, वो आपको राइट हैंड साइड पर नजर आने चाहिए. सेकेंडली, राइट हैंड साइड पर कोई एंडोजेनस वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ये दो शर्तें अगर पूरी होती हैं, यू हैव रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस, जिनको आप इस्तेमाल करके, जिनको सॉल्व करके, जिनके पैरामीटर्स एस्टिमेट करके आप इनडायरेक्टली उनको यूज करेंगे, जैसे पिछली एग्जांपल में भी आपने किया. इन दिस मार्केट मॉडल वी आर गोइंग टू डू द सेम. सो द फर्स्ट स्टेप, यू आर सीइंग सम एक्सप्रेशंस ऑन द स्क्रीन. ये कहाँ से आई हैं एक्सप्रेशंस? ये आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, मॉडल को साइमल्टेनियसली यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. जब आप सॉल्व करेंगे और पाइज को लेबल करेंगे एज डिफरेंट एक्सप्रेशंस, तो इनको यूज करके मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, आप देखेंगे किस तरीके से आप अल्फाज और बीटास को पाइज की सूरत में दिखा सकते हैं. तो वो हमने कर दिया आपके लिए काम, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर खुद प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करें. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बीटा 1 is pi 2 2 over pi 1 2, alpha 1 is pi 2 1 over pi 1 1, etc. You have other expressions as well. तो नेक्स्ट स्टेप, जैसा आप जानते हैं, ये होगा कि इन पाइज को हम OLS से एस्टिमेट करें और इनको इस्तेमाल करके, इस दफ़ा मार्केट मॉडल है हमारे पास, उसके पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं. डेटा के लिए अगेन आप जाएंगे ILS.XLSX, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी लेक्चर नोट्स के साथ. इस डेटा में यू हैव 4 वेरिएबल्स: क्वांटिटी, प्राइस, इनकम एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. तो एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, ये 4 वेरिएबल्स की कुछ 10 ऑब्जर्वेशंस ले ली हैं. ये 10 कम ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करना है, वरना आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. तो एनीवेज, जो 2 रिड्यूस्ड फॉर्म्स हमने निकाली थी, उनको हमने रेग्रेस करके एस्टिमेट किया, यानी प्राइस को टेक्नोलॉजी और इनकम पे, और क्वांटिटी को भी टेक्नोलॉजी और इनकम पे. जब हमने OLS रेग्रेशन रन की, तो हमारे पास वो 2 इक्वेशंस आ गई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. मिसाल के तौर पे, प्राइस इज इक्वल टू -0.82 -2.62 T प्लस 0.9 I, एंड सेकंड इक्वेशन एज वेल. तो ये वैल्यूज किधर से आई? OLS अप्लाई किया हमने, किस पर? ओरिजिनल स्ट्रक्चरल मॉडल पे नहीं, बल्कि रिड्यूस्ड फॉर्म पे. ये क्यों किया? क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके पास राइट हैंड साइड पर एंडोजेनस वेरिएबल नहीं है और आप ये OLS अप्लाई कर सकते हैं. आप OLS ओरिजिनल इक्वेशंस पर इसलिए नहीं कर सकते थे कि वहाँ राइट हैंड साइड पर एंडोजेनस वेरिएबल्स मौजूद हैं, और एन मुमकिन है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी इक्वेशन के एरर टर्म के साथ रिलेट हो जाए. तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए पहले हमने मॉडल को ट्रांसफॉर्म किया रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस में, फिर सॉल्व किया. सो यू आर सीइंग 2 इक्वेशंस. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड you are seeing that we have compared these 2 equations with their expressions, so we can compare and find that the value of pi 1 naught is -0.82 and that of pi 1 is -2.62, etc. ये जो टेबल आपको नीचे नजर आ रही है, इसमें हमने टेबुलेट करके आपको डिफरेंट पाइज, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स, इनकी वैल्यूज दे दी हैं, ताकि आप इनको आसानी से उन फार्मूलाज, उन एक्सप्रेशंस में सब्स्टिट्यूट कर सकें जो हमने अभी निकाले थे, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आप इनडायरेक्टली पैरामीटर की वैल्यूज़ निकाल सकें. सो इन एस्टिमेशंस को यूज़ करते हुए अगर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकाली जाएं, तो स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि वी हैव अल्फाज, बीटाज, लेकिन उनके साथ मैंने ILS भी लिखा हुआ है. सो अल्फा नॉट ILS, अल्फा 1 ILS, जिसका मतलब है कि ये पैरामीटर्स इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर से एस्टिमेट किए गए हैं, OLS से नहीं. और वो वैल्यूज़ आपके सामने हैं. मसलन अल्फा नॉट ILS इज़ -0.45087. तो ये वैल्यू कैसे आई? अल्फा नॉट की जो एक्सप्रेशन आपने जनरेट की थी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स, उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स की वैल्यूज डालें, ज़रा क्विकली उसको डाल के सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके देखें क्या यही वैल्यू आती है. तो दिस इज हाउ वी अप्लाई इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वेयर इक्वेशंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड. सो अभी आपने देखा कि हम कैसे रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. लेकिन आखिरी स्टेप ये होगा कि ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उन्हें इक्वेशन की सूरत में लिख लें.
ताकि उसको इंटरप्रेट किया जा सके, रिलेशनशिप्स पे नज़र डाली जा सके। तो ये इक्वेशंस की सूरत में आपके सामने लिखी हुई हैं स्क्रीन पे। बॉक्स जो बना हुआ है जिसमें अल्फाज और बीटास की वैल्यूज़ हैं जो ILS से एस्टिमेट की गई हैं, उसके नीचे आपके पास दो इक्वेशंस हैं, वन फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, सेकंड फॉर क्वांटिटी सप्लाइड। उसमें हमने इंसर्ट की हैं वो वैल्यूज़ ऑफ अल्फाज एंड बीटास जो हमने इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर से निकाली हैं। आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस और इनकम पे डायरेक्टली रिग्रेस करें, OLS अप्लाई करें, आप देखेंगे कि वो वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ से स्लाइटली डिफरेंट हैं। लेकिन रिमेंबर, वो वैल्यूज़ रिलायबल और कंसिस्टेंट नहीं होंगी क्योंकि एंडोजेनिटी का मसला है, साइमल्टेनिटी का मसला है। अच्छा, उस मसले का ख्याल करते हुए अगर हम ILS अप्लाई करेंगे तो ये जो पैरामीटर्स आपने देखे ये रिलायबल और कंसिस्टेंट पैरामीटर्स हैं। और आखिरी बात जहन में रखें, ये प्रोसीजर आप सिर्फ एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस के लिए नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी हाउ to use the indirect least square technique in Stata. As you know, Stata has different commands and different functions that you can use from the interface, or you can just type the commands. We are going to use a command that is basically not designed for ILS but is designed for two-stage least square and so on. But let me tell you that the results of indirect least square and two-stage least square, which we are going to learn in future, provide the same estimates for exactly identified equations. So in fact, for exactly identified equations, you need to apply indirect least square. And for over-identified equations, you need to apply two-stage least square. But as we'll discuss two-stage least square in future, and we'll also prove and come to know that if we apply the two-stage least square procedure to an exactly identified equation, the parameter values are the same as if we would have applied ILS. So we'll use the command which is basically designed for two-stage least square, but we will apply it to an exactly identified equation, knowing that two-stage least square and ILS provide the same estimations in case of exactly identified equations. So reg3 is the command that is developed for this purpose, for two-stage least square basically. So on the screen you see how to write the command. For example, you are seeing reg3 QPI, where exogenous variables are I and T and endogenous variables are Q and P, and next you are seeing 2SLS. This is an option. We are not in fact seeking 2SLS estimates. We need ILS estimates, but we know that if we apply 2SLS to the equations, we can find the same parameters if the equation is exactly identified and we would have applied ILS. So there are other ways also. We can use simple regression also for that, but I prefer to use this reg3 command. It has many benefits. It shows different stages, etc. So when we have exactly identified equations and we want to apply 2SLS, knowing the fact that it will provide the same estimates as ILS, we use the command reg3. Now look at the syntax of the command. So reg3 QPI is the first equation. Remember that the first demand equation shows the quantity demanded as a function of price and income. So we say reg3 QPI as the first equation that we are going to estimate, but comma shows that you are giving some options of this command reg3. So the first option, exog for exogenous, and in parentheses you have I and T. These are the exogenous variables of the entire model. And then you have an option endog for endogenous, and this gives Q and P. You are telling Stata that Q and P are the endogenous variables of the model. And after a space, you have an option 2SLS, which shows that you are instructing. Reg3 is basically a command designed for three-stage least square. So you are instructing Stata to provide 2SLS estimates instead of 3SLS estimates. Similarly, in the second equation, the only change is that we have written reg3 QPT instead of I. Because the exogenous variables remain the same, the endogenous variable remain the same, you are applying the same technique to SLS. So, but now this time you are estimating the supply equation, which shows quantity supplied as a function of price and the level of technology. So in general, we have given the structure of this reg3, but you can, instead of typing, you can just click if it is easy for you, although I recommend that you type the commands so that you can remember them, and that is quicker, faster. However, if you are habitual to just clicking and doing your job, so you will click on statistics, then on linear models, then on multiple equation models, and then on three-stage least square. And when the window opens after you click on the three-stage least square models,
you will provide your variables, you will provide your options. For example, you will check on 2 SLS because in fact you need 2 SLS estimates instead of 3 SLS. This may be confusing because you are finding ILS through ILS, but you are applying a 3-stage least square command and giving an option 2 SLS. But remember that 2 SLS estimate provide the same results as ILS if the equation is exactly identified. This is why we use this reg 3. This is helpful because you will be using this reg 3 for 2 SLS and 3 SLS as well. So you need to learn only this command for doing 3 of the jobs. So here is the method by which you can use stata to find the same results that you have seen in the Excel file that you are provided with. We use the line st command there and we did the work in few steps, but here we can directly write a command and get the ILS or 2 SLS results. So now let's see what is the exclusion restriction. Why do we use order conditions such as we say the number of exogenous variables excluded from the equation? Why we need the variable to be excluded from the equation? To understand that, we'll use the demand and supply market model and try to make sense of why we need this exclusion. So, for example, in the market model, you saw that technology appears only in the supply equation. It is excluded from the demand equation, and income of the consumer appeared only in the demand equation. So, for the demand equation to be exactly identified, it is necessary that a variable, an exogenous variable, which is not in equation 1 or demand equation, must appear in the second or supply equation. Similarly, for the supply equation to be exactly identified, it is necessary that you have at least one, if you have 2 equation model, you have at least one exogenous variable that doesn't appear in the supply equation, but it must be present in the demand equation. To see why, we will look into some graphs on demand and supply, and I'll try to tell you why we need this exclusion. So first, look at the graph that you are seeing on the screen, which shows a demand curve and 2 supply curves. Consider 2 points on the same demand curve. One point is E1 and second point is E2, as you are seeing. Remember that these equilibrium points are generated by interaction of demand and supply forces. This means where the demand and supply curves intersect each other. So at point E1, the supply curve S1 intersects the demand curve D and gives a price P1 and quantity Q1. When the supply shifts to S2, you have an equilibrium point E2 with price P2 and quantity as Q2. So in fact, this point E1 and E2 lie on the same demand curve. So what I'm going to tell you is that E1 and E2 are 2 points that lie on the same demand curve. They are in fact showing 2 different supply curves. So the supply shifted and you have another equilibrium point. These equilibrium points, these equilibrium quantities are given in your examples when you have the data. So this is why you may be confused. Why don't we have different values for quantity demanded and quantity supplied? Because we have only the equilibrium pairs of quantity and price in the questions that you have been solving. So what I am trying to tell you is that point E1 and E2, which are 2 points that lie on the demand curve, they are actually showing different supply curves. Supply curve shifts through supply shift factors. You know that supply shifts to the right, it rises, or to the left, it falls, because of factors like cost of production, technology, raw materials price, etc. But here, as you see on the screen, you have 2 supply curves, S1 and S2. The supply shifts because of supply shifters. So technology, in our example that we have been discussing, is a supply shifter. It shifts the supply. So to show both points, that is different supply curves, technology must appear in the supply equations, because what we want is that if technology changes, only the supply curve shifts. The demand curve doesn't shift. Then we'll have 2 points on the same demand curve. To identify the demand equation, we need these 2 points, and we get these 2 points by shifting the supply. So whatever is the factor that that shifts the supply, it shouldn't shift the demand, so that we have the same demand curve. So technology exists in the supply equation. Change in technology, level of technology will shift the supply curve, but will not shift the demand curve, as this variable is not present in the demand equation. So this is why we need a variable to identify the demand equation, to have these 2 points. We need a variable that shifts the supply curve. But at the same time, we don't want that variable in the demand equation. It shouldn't shift the demand curve. This is why we say that technology must appear in the supply equation, but not in the demand equation. If you look at the screen, that would be clear.
because points E1 and E2 that you are seeing on the screen give two different points on the same demand curve but on different supply curves. Technology has shifted the supply curve and you have got the 2 points, the equilibrium points, on the same demand curve. So when you have this shift in supply and you get two different points on the same demand curve, you have a variable in fact which shifts the supply curve only. मैं briefly आपको repeat कर दूं, हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो 2 पॉइंट्स जनरेट करे उसी डिमांड कर्व के ऊपर. हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएं उस डिमांड कर्व के, तो आइडेंटिफाई द डिमांड इक्वेशन. वो 2 पॉइंट्स कैसे आएंगे? वो इस तरीके से आएंगे कि आप 2 इक्विलिब्रियम्स लाने की कोशिश करेंगे. रिमेंबर, इक्विलिब्रियम कैसे आता है? डिमांड और सप्लाई की इंटरसेक्शन से या इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से. वो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे. अब हम चाहते नहीं कि डिमांड कर्व बदले, हम एक ही डिमांड कर्व चाहते हैं. तो एक ही तरीका है, सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दिया जाए. इस तरीके से किसी ऐसे फैक्टर में चेंज लाने से जो सप्लाई को तो शिफ्ट करे मगर डिमांड को ना करे, ताकि सिर्फ सप्लाई कर्व शिफ्ट हो. उसकी एक एग्जांपल टेक्नोलॉजी है. कॉस्ट भी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने चूंकि एग्जांपल जो डिस्कस की उसमें यू हैव टेक्नोलॉजी इन दिस सप्लाई इक्वेशन, तो हमने टेक्नोलॉजी को एज एक्सक्लूडेड वेरिएबल रखा. ये एक्सक्लूजन इसलिए चाहिए ताकि हम सिर्फ सप्लाई कर्व को शिफ्ट करें. फ़र्ज़ करें ये टेक्नोलॉजी डिमांड कर्व में भी है और सप्लाई कर्व में भी है, तो जब वो चेंज होगी तो डिमांड भी शिफ्ट होगी और सप्लाई भी शिफ्ट होगी. आपके पास एक ही डिमांड कर्व के 2 पॉइंट्स नहीं होंगे. तो हमने उसका इलाज ये किया, टेक्नोलॉजी को सप्लाई इक्वेशन में रखा, थ्योरेटिकली होती भी उसमें है. उसको शिफ्ट करने से सप्लाई शिफ्ट हुई, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल गए जिनकी बेस पर हमने डिमांड की कर्व बना दी. 2 पॉइंट्स चाहिए अगर लीनियर कर्व है. तो ये 2 पॉइंट्स डिमांड इक्वेशन को आइडेंटिफाई उस सूरत में करेंगे अगर डिमांड फंक्शन, डिमांड इक्वेशन, डिमांड कर्व चेंज ना हो मगर सप्लाई शिफ्ट कर जाए. तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर टेक्नोलॉजी को आप सप्लाई की इक्वेशन में रखें मगर डिमांड की इक्वेशन में ना रखें. यानी सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि वो सप्लाई इक्वेशन में टेक्नोलॉजी मौजूद हो जो सप्लाई को शिफ्ट कर दे. एक्सक्लूजन ज़रूरी है. यू मस्ट एक्सक्लूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डिमांड इक्वेशन टू आइडेंटिफाई द डिमांड, ताकि डिमांड शिफ्ट ना हो. सिमिलरली आप स्क्रीन पर जो नई डायग्राम देख रहे हैं उसमें इस दफ़ा हमने सप्लाई कर्व को कांस्टेंट रखा है और डिमांड कर्व को शिफ्ट किया है, ताकि हम बता सकें कि एक सप्लाई इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके 2 पॉइंट्स लाने के लिए आपको डिमांड को शिफ्ट करना पड़ेगा. क्योंकि मैं दोबारा बता दूं, ये जो टेबल में आप वैल्यूज़ देखते हैं, क्वांटिटी और प्राइस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट E3 एंड E4 एज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. ये डिमांड कर्व D3 से राइज करके D4 हो गई है. इसमें कोई शिफ्टर अप्लाई हुआ है. फॉर एग्जांपल हमारी जो एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की उसमें शिफ्टर था इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो व्हेन यू हैव इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फर्ज करें इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई, डिमांड कर्व राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगी, राइज कर जाएगी. उससे क्या होगा? एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट होगा, E3 से E4 हो जाएगा. तो यू हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सेम सप्लाई कर्व इफ़ यू शिफ्ट द डिमांड कर्व. दोबारा वही पिछली बातें, डिमांड का लेकिन थोड़ा सा उल्टे अंदाज में, क्योंकि अब हमने सप्लाई को फिक्स रखा हुआ है और डिमांड को चेंज कर रहे हैं. तो हमें अब ऐसा फैक्टर चाहिए जो डिमांड को तो शिफ्ट करे मगर सप्लाई को ना करे. यानी डिमांड की इक्वेशन में हो मगर सप्लाई की इक्वेशन में ना हो. तब ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर. तो वो फैक्टर है इनकम. हमने एक फैक्टर इनकम रख दिया डिमांड इक्वेशन में, इसलिए ताकि हम सप्लाई इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकें. तो अगेन 2 चीज़ें ज़रूरी हैं. नंबर 1, कोई ऐसा वेरिएबल जो डिमांड को शिफ्ट करे, सप्लाई को शिफ्ट ना करे. वो डिमांड की इक्वेशन में मौजूद होगा तो डिमांड को शिफ्ट करेगा. मगर दूसरी रिस्ट्रिक्शन, एक्सक्लूजन रिस्ट्रिक्शन, डिमांड की इक्वेशन में हो तो हो, सप्लाई में ना हो, ताकि ये ना हो कि बैक वक्त डिमांड और सप्लाई दोनों शिफ्ट हो जाएं. वो दूसरी कहानी बन जाएगी. आपके पास एक ही सप्लाई कर्व के 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे. तो इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन, यू आर सीइंग द गिवन सप्लाई कर्व S2 and D3 and D4 as 2 different demand curves that have been shifted through the shift factors in demand, या जिसको आप कह सकते हैं demand shifters. So income level is a demand shifter. So to have these 2 points, we have shifted the demand curve और हमारा मकसद जो है वो हल हो गया. So remember, if you have 2 points on the same demand curve, they are generated by a process of shifting in the supply curve. If you have 2 points on the same supply curve, they are generated by a process of shift in the demand curve. So in both cases, if you want to identify the supply equation and the demand equation, you need the exclusion restriction. You need a variable that exists in the other equation but not in the equation that you want to exactly identify.
जैसे अभी आप देख रहे थे कि वी कैन अप्लाई ILS टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस, तो इन एग्जांपल्स के बाद जो काफ़ी हैं, आपको कुछ मैं ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ अबाउट इनडायरेक्टली स्क्वायर। इसको आप समझें कि ये चंद बातें हैं जो उस प्रोसेस पे भी रोशनी डालती हैं और आपके बाद में भी काम आएंगी कि किस सूरत में आप ILS अप्लाई कर सकते हैं और किस सूरत में नहीं कर सकते। पहले ब्रीफली ILS क्या था? ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम इनडायरेक्टली स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। किसको यूज़ करके? रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स, जिसको आपने पाई की सूरत में लेबल किया है। तो हम ये करते हैं कि मॉडल को, जो साइमल्टेनियस मॉडल है, उसे रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स की सूरत में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस बन जाएं जिनके राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक्सोजेनस वेरिएबल्स हों, ताकि हम उनको OLS के ज़रिए सॉल्व कर सकें। OLS के लिए ज़रूरी है कि राइट हैंड साइड पर एक्सोजेनस वेरिएबल्स मौजूद हों। तो जब हम ये कर लेते हैं तो हम अकॉर्डिंगली कोई प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं। अगर इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो ILS अप्लाई कर देते हैं। अगर एग्जैक्टली या ओवर आइडेंटिफाइड है तो हम 2SLS अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि ये जो 2SLS का प्रोसीजर आप फ्यूचर में सीखेंगे, इसको आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस पर भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आप देखेंगे फ्यूचर में कि इफ़ वी अप्लाई 2SLS और ILS टू एन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन, वी गेट आइडेंटिकल रिजल्ट्स। तो ये चंद बातें बड़ी ज़रूरी हैं ILS के बारे में। ये भी जहन में रखें कि 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर को आप ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस पर अप्लाई करेंगे और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस पर भी कर सकते हैं। मगर अगर इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है तब आप ILS अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 2SLS अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात आपने ये सीखी, जिसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे, कि ILS और 2SLS आइडेंटिकल रिजल्ट्स देंगे इन केस द इक्वेशंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो स्क्रीन पे आप एक सोर्स भी देख रहे हैं, जो मैंने हिंट दिया आपको, एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर। आपको याद आएगा कि हमने बेसिकली इस 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर की कमांड जो है वो दी थी टू सॉल्व फॉर ILS पैरामीटर्स, उसको इस्तेमाल किया था इस सूरत में। सो ILS और 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर आप देखेंगे फ्यूचर में उस सूरत में एक जैसे रिजल्ट देंगे अगर उसको पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर इकट्ठा अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल, ये जो रेफरेंस मैंने दिया है कैनेडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको टाइम मिले तो इस आर्टिकल को देखिएगा कि उसने कैसे ये प्रूव किया है कि 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर और ILS सेम रिजल्ट्स देते हैं। तो ILS के लिए कुछ अजम्पशंस बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ILS अप्लाई करें उसके लिए चंद बातें इंतहाई ज़रूरी हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1, इक्वेशंस को एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, जो आप जानते हैं। दूसरा, एरर टर्म्स इन ऑल रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस मस्ट सेटिस्फाई ऑल यूजुअल अजम्पशंस ऑफ OLS। उसकी वजह यह है कि आप OLS अप्लाई कर रहे हैं रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस पे, तो जैसे एक आम इक्वेशन पे आप OLS अप्लाई करें तो उसके एरर को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जीरो मीन और कांस्टेंट वेरिएंस के साथ, और कुछ भी आपने अजम्पशंस पढ़ी थी, ब्लू, बेस्ट, लीनियर, अनबाइस्ड वगैरह, ये पूरी जो शराइत हैं OLS की वो पूरी होनी चाहिए रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस पर भी, अगर आप OLS अप्लाई करते हैं। सिमिलरली, मल्टीकोलिनैरिटी का इशू नहीं होना चाहिए। आपको याद आएगा कि नॉर्मली जब हम OLS अप्लाई करते हैं, हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं राइट हैंड साइड पर वो आपस में सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड ना हो, वरना प्रॉब्लम्स बाज कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होती हैं। तो ये भी आपने इंश्योर करना है कि वो जो यूजुअल आप अजम्पशंस करते थे रिग्रेशन के लिए, OLS के लिए, वो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। फिर एक बात और कि ILS हमने तो 10 ऑब्जर्वेशंस पे अप्लाई कर दिया, ये ठीक नहीं है। स्मॉल सैंपल्स के केस में ILS जो है वो थोड़ा सा बाइस्ड है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता। प्रैक्टिस में जब आप रिसर्च करें, ज़रूरी है कि आपका एक रीजनेबल सैंपल साइज़ हो। लार्ज सैंपल्स जो होंगे उसमें ILS जो है वो अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्मॉल सैंपल्स में वो बाइस्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मौजूद है तो नंबर 1, आप OLS अप्लाई नहीं कर सकते। एंडोजेनिटी, साइमल्टेनिटी की वजह से पैरामीटर्स बाइस्ड निकलेंगे अगर आप सेपरेट इक्वेशंस पर इंडिविजुअली OLS अप्लाई करेंगे। तो उसका इलाज क्या है? पहले आप आइडेंटिफिकेशन स्टेटस मालूम करेंगे, उसके लिए आप या तो मॉडल को सॉल्व करेंगे और यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस दी स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स, या आप कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे एक कंडीशन आपने सीखी जिसे कहते हैं ऑर्डर कंडीशन, जिसमें मॉडल को सॉल्व किए बगैर आप देख लेंगे कि इक्वेशंस एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हैं या ओवर आइडेंटिफाइड हैं या सिरे से अनआइडेंटिफाइड हैं। अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन पे आप कोई टेक्निक नहीं लगा सकते। अगर इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो आप इनडायरेक्टली स्क्वायर लगाएंगे। इनडायरेक्टली स्क्वायर एक सेट, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आप पहले मॉडल को सॉल्व करेंगे, आपको वो एक्सप्रेशंस चाहिए जिसमें आपने अल्फाज और बीटाज या कोई और स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं उन्हें रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस की सूरत में दिखाया है। फ्यूचर में आप देखेंगे
कि और टेक्निक्स के लिए जैसे 2SLS उसके लिए ये सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी ये है कि एक्सोजनस वेरिएबल्स होने चाहिए सिर्फ राइट हैंड साइड पे, और दूसरे मॉडल के अंदर जितने भी एक्सोजनस वेरिएबल्स हैं वो सब के सब किसी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर मौजूद होने चाहिए। तो जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस मिल जाएं, उन्हें OLS से एस्टिमेट कर लें और उन पैरामीटर्स के एस्टिमेशंस को, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स के एस्टिमेशंस को एक्सप्रेशंस में रखें जो आपने डिराइव किए होंगे, और अल्फाज और बीटास को इनडायरेक्टली निकाल दें। ये प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली लीस्ट स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। नंबर एक, चूंकि आप रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस पर OLS अप्लाई कर रहे हैं, तो वही सारी यूजुअल अजम्पशंस और कंडीशंस जो OLS अप्लाई करने के लिए होती हैं वो यहाँ वैलिड होनी चाहिए। कोई मसला नहीं होना चाहिए, जैसे मल्टीकुलिनैरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी अहम बात कि अगर आप ILS अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। ये 10-15 के छोटे सैंपल जो हम एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस में नाकाफ़ी होंगे, बायस्ड एस्टिमेट्स आएंगे। सैंपल साइज़ को रीजनेबल होना चाहिए ILS अप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।